ego consists of three things. Okay, the first is this body, the second is the mind, and there is a third component about which you may not be aware at all. I hope one of you knows about it. It's called the reflected consciousness with which we are functioning in the world. The body and the mind is able to function because of the reflected consciousness, which is coming to you as a reflection from the supreme consciousness called Brahman or Paramatma. The ego, which is now comprising of the three units called body, mind, and the reflected consciousness, is the Jivatma. When we pass off, when we die, we are using the word RIP, rest in peace. What? Rest in peace? His soul. What soul is this? So the one which dies is this ego, not the original consciousness. So ये जो soul, उसका soul बेचारा वो भटक रहा है, उसका कहाँ भटक रहा है, कौन भटक रहा है, कोई बताते ही नहीं हमें क्या भटक रहा है. ये इंडिविजुअल सोल है जो जीवात्मा है, वो भटक रहा है. ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जो वो है वो भटकेगा ही नहीं. अगर वो भटकेगा वो ओरिजिनल नहीं होगा. Original soul is the consciousness, Brahman, always static, ever present, never dying, eternal principle called the awareness principle, from which the reflection comes, and that reflection is what enabling you to be functional in the world. So now everybody is clear about the individual soul is the one which goes. Original soul, which is the Paramatma, can never die, always eternal. This much all clear? Very good. So we have understood what ego is. So therefore, because this ego is functioning based on the reflection only, is it real or false? Because reflection can never be real, right? हम आईने में देखते हैं जो अंदर में है वो false है ना, बाहर जो है वो सच है. उसी तरह यहां पे जो कॉन्शियसनेस है वो ओरिजिनल है, वो सच है, जो रिफ्लेक्शन है वो false. Now is ego false or true? Is ego false or true? Everybody agrees? Then comes the word egoism and the egotism. Egoism is one which says, I am doing everything. That is egoism. I am doing. I am doing. I do it. I do it. I do it. Egotism is, I'm the only one who can do better than everybody. So clearly, three understanding must be there as far as this one word ego is concerned. Jivatma is the one who is doing or thinking he is doing. Paramatma is there because Paramatma is there, the Jivatma can do. Are you clear now? If Paramatma was not there, Jivatma can do nothing. Therefore, he is depending on the consciousness, which is Paramatma, to even shake the head like this. My talking is because Paramatma is behind me. I am not doing anything. I can do nothing without the presence of this consciousness, because simply speaking, I must become aware what I should talk. And that is already before me, that awareness. तो हम कह रहे थे कि जीवात्मा जो है वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस से ही वो आगे बढ़ रहा है. कुछ भी काम वो करेगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो मर जाएगा. और जिस दिन वो रिफ्लेक्शन उसके ऊपर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, उस दिन उसका डेथ है. सो डेथ इज डिफाइंड एज जिस दिन ये हमारे अंदर में जो कैपेबिलिटी है रिफ्लेक्शन को लेना, वो कैपेबिलिटी सिर्फ माइंड के पास है, बॉडी के पास नहीं है. तो माइंड जब हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है, दैट इज द डे ऑफ डेथ. सो डेथ को हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि जिस दिन माइंड यहां से बाहर निकल गया, कहां जाता है वो मत पूछना. फिर 1 घंटे का 4 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसका ट्रैवलिंग सब आपको सिखाना पड़ेगा ना, किधर जाता है, क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, दूसरा बॉडी कहां से लेके आता है, ये सब बड़ा कहानी है. डिज्नी वर्ल्ड आ जाएगा फिर इधर. आई हैव टू क्रिएट डिज्नी वर्ल्ड. बट एनीवे, लेट्स
कीप फोकसिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जितना भी मेरे टॉपिक है. उसके बाद दूसरा एक सेशन भी कर सकते हैं आप मेरे साथ. जब चाहे जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सभी का उत्तर जरूर है. मेरा कुछ नहीं, सब कुछ वेद के अंदर है. बिकॉज वेद इज अल्टीमेट, आई कैन टेल यू दैट मच.